Hello friends, today we are talking about Python programming language in advanced version of an advanced programming of cryptography for reverse cipher. So let's get started. So we are encrypted this message 3 can keep a secret if two of them are dead. And this phrase we are the message variable and translated equal this is the phrase I equal length message -1 while I greater than equal 0। पहले हमने जो है लेंथ जो मैसेज की है उसको वेरिएबल के अंदर डाला, उसके बाद उसको ट्रांसलेट जिस मैसेज को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं एनक्रिप्टेड करने वाले हैं उस मैसेज को, तो उस मैसेज के साथ हम उस ट्रांसलेटेड जो वेरिएबल है उसको हम जोड़ेंगे और उसको 1 बाय 1 उसके अंदर इंडेक्सिंग करेंगे हमारा जो फ्रेज है उसकी। तो उसमें आई इज वाइल लूप लगाया हमने इक्वल आई क्या है आपका, यहाँ पे जो कैरेक्टर स्टोर कर रहा है ना वो इंडेक्सिंग है, एक वेरिएबल है, ठीक है। एंड ट्रांसलेटेड इक्वल प्लस मैसेज आई इक्वल आई -1। So we are printing this translated phrase and evaluation of this message to encrypted form. So here is this encrypted message. So output is encrypted to our message. Then we create our encrypted message to decrypted form. So here is the decrypt our encrypted message. This is our encrypted message. Simple text here, and we can last program to encrypted this message, and same program, just the string will be copy and paste on this message section, and all programs are same. And this is the reverse of that kind of thing, the decrypt our plain text we can get. So this is our plain text and decrypted our Python first program, encrypted and decrypted. So thank you very much. See you next video. Follow me.